कभी कभी आसान से सवालों का जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो, है ना? वेलकम टू वी डिस्ट्रैक्शन, द वर्ल्ड्स क्रेजीएस्ट गेम शो नाउ इन इंडिया। Hello, boys and girls, ladies and gentlemen. Welcome to We Distraction with me, Ritvik Dhanjani, the most charitable host on Indian television. Well, charitable why? Is because मैं अपने contestant से पूछता हूँ कुछ आसान से सवाल, and in return, I give them so much of money. But while they try to answer my questions, I also distract them by making them do things which are embarrassing for them, but entertaining for us. Nonetheless, we're having fun. Well, let's welcome our contestants tonight, जो बड़े enthusiastically We Distraction खेलने के लिए यहाँ पर तैयार हुए हैं. Hi, Fakrani, Aditi, Pashmin, and Abu Zair. What's up, guys? All well, you say? Oh, wow, man, Sara, wow. What's up, buddy? How you doing, Abu Zair? तेरे बालों को क्या हुआ यार? कोई दुर्घटना हुई? नहीं फिर? अपना own style. या वो own style, yay. बॉडी दिखाओ तुम्हारी. हाय हाय, क्या बात है. Abu Zair, कहाँ से हो तुम? I'm from Bhopal, but I belong to Iran. You belong to Iran? Yeah. Irani living in Bhopal? Yeah. ये कैसे हुआ? My grandfather came India. वो लोग हॉर्स बेचते थे, हॉर्स होते हैं ना घोड़े. घोड़े बेचते. हाँ, तो वो लोग मतलब पार कर गए, मतलब इंडिया में आ गए. बेचते पार करके पता ही नहीं चला कब पार हो गए. मुन्ना ईरानी is my दादा. मुन्ना ईरानी. Yeah, everybody knows him. Even if they don't know, नाम से डर जाए बंदा. अरे. मेरे ग्रैंडपा का नाम है मुन्ना ईरानी. Aditi, quite adventurous Aditi that we know of. Yes. जिंदगी में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा एडवेंचरस किया है तुमने सिवाय फिलहाल अभी अबू ज़ैर के साथ खड़े होने के? I'm an animal lover. Oh no, really? Yeah. Then you must be loving Abu Zair right now. हाँ, so Aditi, you're an animal lover. I got to shoot with snakes. I feel that was the most adventurous time when I actually went and touched each one of them. जब तुमने उनको छुआ तो कुछ हुआ? Excitement हुई. सांप ने कुछ नहीं किया. अबू ज़ैर तुम भी कर सकते हो सांप वाप को बहुत पकड़ बार सकते कर चुका हूँ. हो? बहुत बार कर चुके हो? जब मैं छोटा था तो स्कूल में स्नैक शो हुआ. कौन सा? स्नैक शो. स्नैक मतलब खाने वाला? Oh, that's snacks. Snake show. Whatever is that thing? He's confusing me. I don't get it. तू बोलता कुछ है रे, मतलब कुछ और होता है. कभी बोलता है स्लिपिंग, कभी बोलता है स्नैक्स. Snacks. तुम्हारे स्कूल में स्नैक शो हुआ तो तुमने स्नैक का क्या किया फिर? I went. तो मैंने तो गले में लेके डाल दिया उसको, उठा के मैंने सब पे ही फेंक दिया, तो सब उठे और भागने लगे. सब उठे और भागने लगे. They was running. They was running. Where they was running? ग्राउंड में. They were because उनके पीछे स्नैक भाग रहे थे. तुम्हारे दिमाग में थोड़ा दर्द तो नहीं हो रहा? सब खुजाओ दिमाग खुजाओ. अच्छी बात है. गुड. So फुकरानी, स्विमिंग करते हो? Swimming sometimes. Sometimes. Yeah. कोई इंसिडेंट हुआ कभी स्विमिंग करते करते? Okay, there is one incident. It happened while swimming. I did it. Well, zoom. When I come up, you know what happened? What happened? तुम्हारी चड्डी उतर गई? Underwear because of gravity. Oh, so there was gravitational force underneath your underwear. And everybody was. And I was like, I don't know. I still don't know. That is a UP. UP? Yeah, UP. UP कहाँ पे? Which means underpant. फुकरानीस, कैसी बातें करते हो यार तुम? पश्मिन, आपकी आदत है कि आपका जब मन करता है आप घूमने चली जाती है. हाँ. कहाँ गई हैं ऐसे? बहुत जगह गई हूँ. जैसे? बेसिकली गोवा. क्योंकि गोवा इज. बहुत सारी जगह गई हो. I have been to the whole world. I have actually been to like Goa, North Goa, South Goa. Okay guys, I will tell you what is our show about. मैं आपसे पूछता हूँ कुछ आसान से सवाल. अगर आपको मेरे आसान से सवालों का जवाब पता है, all you have to do is press the buzzer. Okay? So on the count of 3, आप सब लोग अपने सामने पड़े हुए जो कपड़े हैं अपने buzzers के ऊपर से वो उठाएंगे. 3, 2, 1. Pick it up. आटा.
आपके बजर्स आपके आटे के बीच में है। Now, आपको अपने बजर्स दबाने हैं when you know the answer to my question. लेकिन बजर्स आप हाथ से नहीं दबाएंगे. All you have to do is dip your face in the flour, press the buzzer. All right, your category is white. यानी कि आपके सारे सवाल और जवाब white के आसपास होंगे. Okay? चलिए. Your first question. How many white squares are there on a chessboard? 32. 32 is the right answer for Kreni. Next question, guys. If you break an egg slightly, so what will come out faster, egg white or egg yolk? Pashmin. Egg white. That's the right answer, Pashmin. Your next question. In which state in India are white tigers found? Yes, Abu Zaid. हिमाचल प्रदेश. Himalaya Pradesh. I'm like, what? हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में तुम्हें कौन से सफेद टाइगर मिलते हैं मुझे बताओ अबू ज़ैद? Because I already have seen many times. तुमने देखे हैं हिमाचल प्रदेश में? The answer is West Bengal. Your next question. Ran of Kutch जो गुजरात में है, किस एलिमेंट की वजह से वाइट है? Yes, Pashmin? Salt. That's the right answer. Next question, guys. अगर ब्राउन ब्रेड गेहूं से बनता है, तो व्हाइट ब्रेड किससे बनता है? आदिति. मैदे से. That's the right answer. Next question. किस क्रिकेट के फॉर्म में व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म्स होती हैं? आदिति. Baseball. What? Sorry. Baseball? No. Test match. It's not baseball. That was an awesome round. Very, very well played. Superb. और अब वक्त आता है to see who is at the lowest at the scoreboard. Okay, it's Fukreni at 1, Pashmin at 2, Aditi at 1, and Abu Zair at 0. क्या हो गया अबू ज़ैर? तुमने तो आटा लगा दिया यार अपने किस्मत पे. खैर अबू ज़ैर, thank you so much for being with us. Tada, bye bye is all we can say. And you three, congratulations, you guys are moving on to the next round. Go ahead. All my contestants, अगर आप लोगों की cooking खत्म हो गई हो, so it's time to move on. Can we please have you back on stage? Welcome to round 2. अब ये, this is called the Wheel of Fortune. Fortunately, you guys are going to be the fortunate ones to be tied on it. You will be rotating in circles while you answer my questions. Oh. There are no buzzers. This round, everybody gets 45 seconds. In 45 seconds, the person to answer maximum question moves ahead. Well, क्योंकि आप लोग इस distraction में खेलेंगे the Wheel of Fortune, आप लोग सिर्फ घूमते रहेंगे. That's exactly why आपकी category है motion. Fukreni, jump on. राका और तेजा, जरा बाहर आओ. सूली पे चढ़ा दो साले को. Fukreni, are you ready? Yes. Comfortable? Yeah. We will make you uncomfortable in less than a minute. Start rotating. Fukreni. Ouch. Okay. Your first question. Scientifically, एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं? Is it locomotion, commotion, या slow motion? Locomotion. Locomotion is the right answer. Your next question. Earth कितने दिनों में sun के around एक revolution लेता है? 365 days. Fantastic. You know it. Say it earlier, man. अगर आप साउथ की तरफ 55 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? Pass. What? It's south. Okay, your next question. The famous Salt March that was led by Mahatma Gandhi is also known as? Dandi March. That's the right answer. All right, your time's up. I'm swinging. Very, very nice. Pashmin, it's your time. Go ahead.
Start rotating now. तुम्हारी चोटी इस वक्त सांप की तरह लग रही है. Your first question. इंडिया की पहली मोशन पिक्चर कौन सी थी? Pass. The answer is Raja Harishchandra. देवडी का एक गाना किस अत्याचार पे बेस्ड? Emotional अत्याचार. That's the right answer. Your next question. Year 2014 में कौन सी हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी जो स्पेस ट्रैवल पे बेस्ड है? Pass. Interstellar was the name. Your next question. Happy, sad, angry. ये सारे किसके टाइप्स हैं? Emotion. That's the right answer. All right. Stop that. Stop that. Thank you very, very much. Now, Aditi, come on. Start rotating, Aditi. थोड़ा जोर से घुमाएगा, please. Thank you. Ooh, झूला चालू. Yeah, this is so much fun. All right. Your first question. Okay. इनमें से क्या एक सर्कुलर मोशन में घूमता है? साइक्लोन और सुनामी? Cyclone. That's the right answer. थोड़ा और जोर से घुमाओ. अरे नहीं, उतना भी नहीं. Okay. कार की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या प्रेस करना चाहिए? ब्रेक, क्लच या एक्सीलरेटर? Escalator. Escalator. नहीं, accelerator. Accelerator is the right answer. What is the opposite of promotion? Demotion. That's the right answer. किसी भी मूविंग व्हीकल में ज्यादा देर ट्रैवल करने से कौन सी सिकनेस फील होती है? Nausea. And your time's up. Nausea was the right answer. Fantastic. Okay, that was fun. All right, Aditi, very, very well done. Well, मेरा तो सर घूम रहा है आप लोगों को देख कर. अब घूमकर जरा हम scores देखते हैं. Let's have a look at the scores. Aditi at 5 points. Fukrani at 3. Bashmin at 2. Bashmin, well, I think the wheel of fortune did take you for a bad luck ride, Very. didn't it? Well, it was awesome playing with you. All the very best. Thank you very much, Bashmin. Thanks. And Fukrani and Aditi, we will see you in the final round. And one of you is going to take home a lot of money tonight. All the very best. We'll see you soon. Hello, both of you. Fukrani and Aditi. Yes. Do you guys have any clue? तुम्हें सारा सा भी अंदाजा है कि हम तुम्हारे साथ अब क्या करने वाले? No. No? Are we supposed to lift this? You're not supposed to live that. We'll make you eat that. You don't think I can make you do it? I will. Believe me. Okay. So Fukrani, क्या इसके पहले आपने कभी घास खाई है? Arey, I'm not hungry. Good, but we're not going to make you eat the grass. I'm just kidding. Now, I want to tell you, you like guns? Yeah. Have you guys ever been shot? Now. No. Okay. Let's give them the experience. Can I call my Kallu Mama on stage? Please. So let's give you guys a demonstration of what's going to happen. Why don't you shoot somewhere in between them? Fukrani, Yes. क्या हो रहा है? डर हो रहा है. डर हो रहा है? Yeah, बहुत ज़्यादा. कोई बात नहीं. अब डर निकल जाएगा आपका. Let me explain what the round is all about. Here, I'm going to ask you a couple of simple questions. If you know the answer, you press the buzzer. आपने सही आंसर दिया, that means the other person gets shot. लेकिन अगर आपने गलत आंसर दिया, you get shot. Where you get shot is decided by me. Pick up your buzzers. Fukrani and Aditi, your category is very simple. It's movie character names. Your question number 1 for round 3 is दबंग में चुलबुल पांडे अपने आप को और किस नाम से बुलाते थे? Yes, Aditi. Robin Hood Pandey. That's the right answer. Okay, Fukrani, why don't you turn around for me? Ouch. Right in the center. Moving ahead, your next question. Film 3 Idiots में रैंचो के 2 बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे? Okay, Aditi. Raju and Farhan. That is the right answer. Fukrani, तुम यहाँ मार खाने आए हो? Turn around.
onto the back, 2 shots. All right, Fukrini, there we are. Before we move on to the next question, do you guys want to take a break? Yeah. All right, we'll give you a break. Let's take a break. I will see you guys just after the short little while. We'll shoot them a little more. Well, hello everybody. Welcome back to We Distraction with me, Adi. And here we are in the final round. And Aditi and Fukrini are just being shot. Your next question. Baburao Ganpatrao Apte किस फिल्म में स्टार गराज चलाते थे? What's the answer? Hera Fairy. That's the right answer. Turn around. I'm sorry. Shoot it on the hand. Ow. Your next question is, किस फिल्मी कैरेक्टर का नाम मर्फी रेडियो पर रखा गया था? Oh wow! Answer. Murphy. That's the right answer. You have a healthy stomach. Let's aim at the stomach. Okay, your next question, guys. फिल्म पीके में अनुष्का शर्मा का लव इंटरेस्ट कौन था? Yes, sir. Sushant Singh Raj. Is the right answer. I'm sorry, Fukri. Why don't you hit him 2 in the center? Hey! All right. Your next question, guys. 11 मुल्कों की पुलिस किसे ढूंढ रही है? John ko. That's the right answer. Turn around. Yo. Just go and wash your... It looks really bad. It looks like you've done something in the costume. And now the round has come to an end. Kallu Mama, thank you. Such a modern Kallu Mama with those kind of shades. Let's have a look at the scores after this round. Aditi at 5. Fukrini at 1. Very well played, Fukrini. You were a great sport. Just go ahead. Have fun. We might shoot you if you don't run right now. Run out of this place. Okay, Aditi. Yay. Congratulations. You're the winner for We Distraction. And all of you guys back at home, don't go anywhere. We'll see you in just a little while after the short break and see how much Aditi wins tonight. Hello, everybody, boys and girls, ladies and gentlemen. Welcome back to We Distraction with me, Ritwik Thanjani. और अब हम नजर डालते हैं हमारी विनर पर जो है Aditi. Well, Aditi, you have won a We Distraction tonight. How do you feel? आपको देखने के आप कितने सारे पैसे जीते हैं. Do you want to see the money? Of course. Mona, darling, जरा अंदर आओ. देखिए डेविल के हॉर्न्स साथ में नथनी पहनकर आई है. इतनी इंडियन मोना है ये. थैंक यू मोना. So Aditi, आपके पास इन टोटल है 25,000 rupees to be won. ये सारे पैसे इन 5 different jars में अलग-अलग denominations में बटे हुए हैं. आपके पीछे हैं 5 चाबियां. Yeah. आपसे मैं हर सवाल से पहले पूछूंगा कि आप कौन से जार के लिए खेलेंगे. जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा अगर उस सवाल का सही जवाब आपको पता है तो वो जार की चाबी आपकी. लेकिन अगर वो सवाल का सही जवाब आपको नहीं पता तो वही चाबी आपको उठा के यहां पर रख के तोड़नी पड़ेगी. यस, दैट मीन्स यहां से आप कितने पैसे जीत कर जाएंगे ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. Okay. ऑलराइट Aditi, योर फर्स्ट क्वेश्चन. कौन से जार के लिए खेलेंगे आप? 3,000. द क्वेश्चन फॉर 3,000 इज फिल्म अंदाज अपना अपना में क्राइम मास्टर गोगो मोगैम्बो के क्या लगते थे? Bhanje. भतीजे. प्लीज पिक अप द की नंबर 3. कौन से जार के लिए खेलेंगी आप? 4,000. So for 4,000 rupees, this is your question. Which is the only mammal that can fly? Take a wild guess. Bat. Right answer. Pick that up. 4,000 rupees are yours. Yay! Your next question. Yes. कौन से जार के लिए खेलेंगे? 5. 5,000 के लिए ये रहा आपका अगला सवाल. किस आइलैंड के नाम का मतलब है 1 लाख आइलैंड्स?
मेरे को नहीं पता. Lakshadweep Island. Lakshadweep. Please pick up the key of 5,000. Here we go. आपके 5,000 रुपए गए. Your next question. कौन से jar के लिए? 6. 6,000. All right. इंडिया पर राज कर रहे कौन से रूलर्स ने जलेबी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? British. ब्रिटिश जलेबी खाते थे. प्लीज 6,000 की चाबी उठाइए. There we go with another 6,000 rupees. Jalebi comes under the Mughlai cuisine. Okay, last but not the least, 7,000 rupees. Name any 3 rivers that flow through India. Kaveri, Krishna, or Ganga. Right answer. You win 7,000 rupees. Take the key. Very, very well done, Aditi. All I have to say is congratulations. You're really funny, but indeed, you have won loads of money. Congratulations. Give it up for Aditi. And for everybody at home, remember not to try any of these distractions at home is because making rotis and biting bullets should be left only to Rajni sir. It's because he can do everything. You can't. So don't try. I'll see you in the next episode.